Hi Bacha Party, how are you all? Yes, you all are very fine and doing great job, good job. Celebrating so many festivals and doing studies also, right? So, move on. Our chapter number 4 we already started and you already have seen so many lectures of this chapter number 4, house, right? So, once again I am going to take a quick recap. Whatever we have learned, I will take the recap. Okay, so why do we need a house? Yes, we need a house to live in. We need a house to live in, and all the family members are living together in a house, right? A house protect us from all type of season, and all type of season like heat, cold, rain and strong wind. And apart from these, a house protect us from thieves and wild animals also, right? And according like we human beings, animals also need a house, है ना? But they are not using house. So what they are using, how they can protect their self from seasons? So they all are using the shelters. Right? So in that category, dogs lives in kennel, horse lives in stable, lion lives in den, cow lives in shed, birds always make nest on the trees, and hen lives in coop, right? So, and then I explained you about the types of houses. There are two kinds of houses, kacha house and pakka house, right? Early man was using the caves to protect their self, है ना? And it's time to see. Then they think, and then they starts making the kacha house, है ना? So what are the materials they were used to make the kacha house? Yes, they used the mud, bamboos, leaves, है ना? But they realized that kacha house is not very strong. है ना? It cannot protect them in front of heavy rainfall, right? So that's why they start thinking, यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा. We have to do something new, something different, है ना? Then we can get this strong house. So they start using these stones. है ना? Then they realize, yes, stones are more stronger rather than the mud. So they starts making the house by using stones, right? है ना? Then now जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, it's time to see they starts making the permanent houses. है ना? And what are the materials is required to get a permanent house? Nowadays we all humans, if we want to build a house, we are using what kind of materials we are using? So we are using bricks, cement, and iron, steel and glass, right? Then we are getting the pakka house, the permanent house, है ना? And then we talked about the hut, है ना? Then we talked about bungalow and an apartment, right? So there is little difference between bungalow and an apartment. Bungalow is made by the person, and there in bungalow there cannot live more than 2 families, है ना? And apartment there can be live so many families can live together in apartment. And bungalow they don't have the flat system. They don't have the multis and they don't have the flat system. But
An apartment has the story system, multi system and the flat systems also. So in apartment there so many families can live together, right? Understand? Hope you understand nicely, है ना? Then I talked about the roofs, है ना? Serious students, when we will talk about a house, अगर हम किसी एक घर की बात करते हैं, then definitely we will talk about the each and everything which is related with a house, which is related to a house, right? So in this condition I already explained you about the roofs, and I already told you there are two types of roofs. There are two types of roofs is given in your book. First one is flat roof, है ना? Pupil, those who are living in plain areas, plain areas we can call in samtal in Hindi, and मैदानी इलाका also we can call in Hindi, है ना? So pupil, those who are living in plain areas, जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं ना बेटा, they are using the flat roofs, है ना? आप सब अपने अपने घर की roofs देखना, अपने घर के terrace पे जाना, so you can realize that yes you have the flat roof, है ना? You are running on your terrace, you are playing on your terrace, है ना? Sometimes you will organize some small functions on your terrace also, है ना? Sometimes some birthday parties also you are organizing at your homes on your terrace. It means what? अगर आपकी छत जो है, आपके घर की छत जो है बेटा वो ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ होती, so you can you walk on your terrace? No. Can you run on your terrace? No. Can you organize a small party at your terrace? No. Why? Because the roof of your house is not flat, so how you can run, how you can play, how you can organize a small party, and how your mama can walk at night after taking the last meal of the day, after taking the dinner, how your mama can walk if roof is not flat, है ना? अगर आपके घर की छत फ्लैट नहीं होती तो क्या आप घर की छत पर खेल सकते? क्या आप घर की छत पर दौड़ सकते? क्या रात का खाना खाने के बाद आपकी मम्मी छत पर वॉक कर सकती? क्या आप एक छोटा सा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते? नो। अगर आपकी छत ऊंची नीची उबड़ खाबड़ या स्लोपी होती तो यू कांट ऑर्गेनाइज दैट थिंग्स, यू कांट डू दैट थिंग्स, है ना? इवन यू कांट गो अप ऑन द टेरेस, आप तब तो टेरेस पे भी नहीं जा पाते अगर आपकी टेरेस स्लोपी होती. सो pupil, those who are living in plain areas, they are using the flat roofs, right? And pupil, those who are living in mountain areas, on hill stations. See, hill station is always famous for snowfalls, है ना? हमेशा वो snowfall के लिए famous होता है. If pupil will use the flat roofs over there, then what will happen? अगर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं ना बेटा, वो फ्लैट रूफ्स का यूज़ करते तो क्या होगा? जितनी भी बर्फ़ गिरेगी ना, जितनी भी बर्फ़ पड़ेगी, वो सारी की सारी बर्फ़ छत पर जमा हो जाएगी और फिर उसे वहाँ से हटाना निकालना बहुत मुश्किल होगा. और हम ऐसा कब तक करेंगे? कितने लंबे समय तक आपके छत पर जो भी बर्फ़ पड़ेगी आप उसको कितने लंबे समय तक रिमूव करेंगे? नो, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. That's why pupil, those who are living on mountain areas, on hill stations, on hilly area, they always using the sloping roof. They always using the sloping roofs, right? And then we talked about the temporary house. Temporary means not permanent, है ना? Temporary means एक what we can say temporary in Hindi, यार मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि temporary means what in Hindi.
सो टेम्पररी मीन्स इट्स नॉट परमानेंट, वो पक्का नहीं है. वी कैन फोल्ड इट, वी कैन कैरी विथ हिम, वी कैन कैरी विथ अस, राइट. सो इन दिस कैटेगरी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दी हाउस बोट, है ना, एंड दी caravans, tent and the igloos, right. Yes, temporary means अस्थाई, temporary means अस्थाई, ठीक है, जिसे हम अपने साथ फोल्ड करके कैरी करके अपने साथ लाना ले जाना कर सकते हैं. सो टेम्परेरी मीन्स अस्थाई. इन हिंदी वी कैन कॉल अस्थाई, है ना. सो इन दिस कैटेगरी वी लर्न अबाउट द हाउस बोट, वी लर्न अबाउट द caravans, वी लर्न अबाउट द टेंट, वी लर्न अबाउट द igloos, है ना. हाउस बोट मीन्स व्हाट? हाउस एंड बोट, देयर इज टू वर्ड्स, हाउस प्लस बोट, है ना. हाउस से तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउस मीन्स घर, राइट. एंड बोट से यू कैन अंडरस्टैंड नाइसली बोट कहाँ चलती है? ज़मीन पे तो चलती नहीं है बेटा, ट्रैक पे तो चलती नहीं है, पटरी पे. देन कहाँ चलती है? बोट ऑलवेज मूव्स ऑन वाटर, पानी पे चलती है. सो हाउस बोट, है ना, फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना. दिस काइंड्स ऑफ हाउसेज यू कैन सी स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट. एंड देन द caravan, caravan means a small kind of house which can moves with wheels, है ना. caravan means एक तरह की गाड़ी होती है बहुत बड़ी सी, जिसमें every kinds of facility like our homes we are having in that caravans. और caravan so we can move, we can drive, है ना. And then tent, yes, tent is also the kind of a temporary house which used by the soldiers and scouts, है ना. And then igloo, igloo is a house which is made by the snow, especially in the mountain areas, especially in the hilly areas, है ना. लेकिन when you will think about the snow, then what you realize? What you realize? You realize that yes, snow means ठंडा ना. But when you will go inside the igloo, you feel warm. जब हम बर्फ़ के घर के अंदर जाते हैं ना बेटा, तो वी फील नॉट कूल, वी फील वार्म, हम गर्म महसूस करते हैं, राइट. देन नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ गुड हाउस. टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट अ गुड हाउस. हाउ मेनी things has to be in a good house? How many things has to be in a good house, है ना. On page number 25, on page number 25, है ना. So today I will explain you about a good house, about a good house. ठीक है, I will show you in front of the camera. I am going to explain about these. First I will read whatever is written in your book, then I will explain to you, then I will explain to you. See, I am going to explain this wala paragraph, right beta? Okay, first I will read whatever is written in your book. We like to live in a good house. Yes, it is very much right, it is very much correct. We all wants all kind of facility is in our house, है ना. If there is no facility, है ना, then what we feel? We are not feeling comfortable. So it is very much correct written over here in your book is that we like to live in a good house. Right, now I am going to read second line. A good house has doors. Yes, a good house has doors and windows. This facility should be there in a good house, in a good house, है ना. And then this question is raised in your mind beta. ये question आपके दिमाग में आना चाहिए. This question you have to ask with your teachers. Why do we need doors and windows in a house? Why? Suppose there is no such type of good doors at your homes.
suppose there is no good kinds of windows in your homes, then what will happen? Then what will happen? How you will get fresh air? है ना? In our Khargone area is very famous for heat. यहाँ बहुत गर्मी होती है ना? There are 12 months in a year, है ना? And we all are feeling hot at least 8 or 9 months in a year, है ना? Only December and January we are feeling cool, we are feeling cold, right? Apart of these 2 months we always feeling hotty. हमेशा we are feeling hot, हमेशा गर्मी लगती है ना? So especially in our area, a good kind of house has the proper doors, proper windows to allow the fresh air get in the house. To allow the fresh air get in the house. If there is no proper door, if there is no proper window, then how will get the fresh air inside? How? No, you feel hot, है ना? You feel very suffocate. Oh my God, I am feeling so suffocated, यार, है ना? There is no proper air, there is no proper sunlight, है ना? So it is very much correct written over here कि a good house has doors and windows to allow the fresh air get inside the house, right? Up. See dear students, there are 2 kinds of thing which is very required, very much needed for a good house, right? First one is fresh air, ताज़ी खुली हवा, है ना? And second one is proper sunlight. First one is fresh air, second one is proper sunlight, right? So fresh air is very much required. If fresh air is not there, we all are feeling suffocated, है ना? Then sunlight. Why sunlight is needed, है ना? This question is raised is in your mind, ma'am. Why sunlight is very much needed? Air तो we can know, yes, air is very much required. बिना हवा के how we can breathe, है ना? But why sunlight is required? We have तो artificial light. हमारे पास तो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो फिर हमें सूरज की रोशनी की क्या ज़रूरत है? No बेटा, it's not like that. They are तो whatever lights you are using at your homes like LED and doom lights and moon lights and all, these all are the artificial lights. These all are the man-made lights. We human beings created these lights for our facility, for our needed, है ना? But the sunlight is very natural light. Sunlight is a kind of a natural light, है ना? Sunlight, see, suppose this example I will give you in Hindi, है ना? Nowadays which season is going on? Yes, you all knows very well, rainy season is going on, है ना? And which kind of difficulty we are facing, especially in the rainy season? Which type of difficulty we all are facing in this season, especially we women's, है ना? कि कपड़े बारिश में कहाँ सुखाएं? मम्मा हमेशा कहती है ना, आज बारिश हो रही है, फटाफट से मुझे कपड़े धोना है, नहीं तो सूखेंगे नहीं. और मम्मा लोग जो है वो वॉशिंग मशीन में ड्रायर भी यूज़ करती हैं, सबके मम्मा करती हैं, है ना? सो क्यों करती हैं? अगर बारिश होगी बेटा, बहुत बादल होंगे, तो कपड़े कैसे सूखेंगे? सो सनलाइट में, है ना? अगर आपके घर में मान लीजिए किसी भी खाने की चीज़ में कुछ कीड़े लग जाते हैं या कोई चीज़ गीली हो जाती है, तो मम्मा क्या करती है? आपको क्या बोलती है? मम्मा टेल्स यू बेटा
take these all the materials, है ना, and keep all these thing in sunlight. Beta, please take all these materials and go and keep all these material under the sunlight. बेटा ये सारी चीज़ें ले जाओ, देखो ये काजू है, ये बादाम है, या ये जो भी दाल है इसमें कीड़ा लग गया है, इसमें घुन लग गया है, आप इसको ले जाओ और छत पर ले जाके सूरज की रोशनी में रख दो. Why mama saying like that? है ना, why mama saying like that? वो इसलिए ऐसा कहती हैं बेटा, because sunlight can kill the germs. This artificial light, the tube lights, the bulbs, LEDs, all, it cannot kill the germs. ये germs को नहीं मार सकते हैं. Even they are the creators of the germs. ये तो और कीड़े लेकर आते हैं अंदर घर के. But in sunlight, sunlight has a power that to kill all kinds of germs. सूरज की जो रोशनी होती है ना बेटा, उस रोशनी में इतनी ताकत होती है कि वो सारे के सारे कीड़ों को मार सकती है. ठीक है, so that's why these two things, fresh air and sunlight, is very 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 required for a good house, है ना. Then now I am going to read the next line. A good house has rare neating the doors and windows to stop house flies and insect. Yes, see, yes students, nowadays so everybody has the net in front of the door, in front of the windows, है ना. We all are using the net kind of door. मॉस्किटो डोर यू आर सेइंग दैट ना, आप जिसको मॉस्किटो डोर बोलते हो, जिसको मॉस्किटो विंडो बोलते हो, वी ऑल आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ नेट. जो मेन डोर होता है, इन फ्रंट ऑफ दैट डोर वी ऑल आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ डोर, है ना. सो व्हाई इट इज़ नीडेड, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट दैट मॉस्किटो डोर? बिकॉज वी ऑल आर फीलिंग दैट मॉस्किटो कैन get us sick, house flies can get us sick, है ना. That's why we all are making the mosquito doors in front of our houses. Because we don't want to allow the mosquito get in, because we don't want to allow house fly in, है ना. That's why we all are using these kinds of nets, these kinds of net doors, है ना. Then a good house has ventilation to allow fresh air to move inside a room. Yes, it is very much correct written over here in your book. See, you have to underline this word ventilation. Ventilation word is new for you. Before you, I think you are hearing in the chapter only, है ना. So this word is new for you to get it underlined. See, you have to understand the meaning of ventilation. What is ventilation? Why it is required in a house? Why we all are making ventilations when we will build a house, है ना. So this question is in your mind कि ventilation का क्या काम होता है. Why we are having the small kind of windows at the top, है ना. घर के ऊपर एक छोटी सी जाली टाइप की क्यों लगी होती है? Why we are calling that ventilation? What is the work of ventilation in our house? Why it is very much needed? Why it is very much required to get a ventilation in our house, है ना. Without any reason तो we are not doing anything. Without any requirement तो we are not doing anything. Then why this ventilation is needed? This question you will ask from your parents. I am to explaining you, but I am giving you this a little work. You will ask about ventilation to your parents. Papa, Mama, why ventilation is needed in the house, है ना. So what is the work of ventilation? Ventilation allows, see beta, when day will get dark, when
डे विल गेट डार्क, जब रात होती है. सो कैन वी ओपन द डोर, है ना. वाइल स्लीपिंग कैन वी ओपन द डोर्स, हम दरवाज़ा खोलकर सोते हैं क्या? नो. बिफोर गोइंग ऑन बेड वी ऑल आर closing all the doors and all the windows of our houses, है ना. और मम्मा बोलती है सोने के, पापा को बोलती है मम्मा सोने के पहले दरवाज़ा देख लेना अच्छे से बंद है कि नहीं, वो किचन वाली विंडो देख लेना, पता चला रात को वहाँ से बिल्ली आ जाए. तो बिफोर गोइंग ऑन बेड वी ऑलवेज क्लोज ऑल द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ आवर हाउसेस. देन हाउ वी विल गेट फ्रेश एयर? We need the oxygen while sleeping also. We all are human needs always oxygen. Whether we are working or not, whether we are studying or not, whether we are sleeping or not, oxygen is very very required for all of us. So this ventilation, when the all doors and the all windows are closed, so this ventilation gives us the fresh air, है ना. This ventilation gives us the fresh air. ये वेंटिलेशन का काम होता है जब घर के सारे खिड़कियाँ और सारे दरवाजे बंद होते हैं ना बेटा, तो ये जो वेंटिलेशन है ये हमें ऑक्सीजन उस समय देता है. और जो भी हम अपनी सांस छोड़ते हैं, है ना, वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम जब भी हम व्हेन वी आर टेकिंग द ब्रीथ वी आर इनहेल द ऑक्सीजन, है ना. एंड व्हेन वी आर एक्सेल, जब हम सांस लेते हैं वो इनहेल होता है, छोड़ते हैं तो एक्सेल होता है, ठीक है. तो जब हम इनहेल करते हैं तो वी आर इनहेल द ऑक्सीजन, और जब छोड़ते हैं तो वी आर रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. सो सोते समय भी वी आर इनहेलिंग एंड वी आर एक्सेलिंग, है ना. सोते समय भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. तो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दी ऑक्सीजन वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट वेंटिलेशन, है ना. और वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड वी आर एक्सेलिंग, सो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना बेटा, वो सारी की सारी गर्म हवा, वो सारी की सारी गंदी हवा, वो सारी की सारी खराब हवा वेंटिलेशन से बाहर हो जाती है. और वेंटिलेशन से जितनी भी फ्रेश एयर है, जितनी भी फ्रेश ऑक्सीजन है, वो हमारे घर के, हमारे रूम के अंदर आती है, ठीक है. दैट्स वाई द वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर अ गुड हाउस, है ना. सो आई विल रीड वॉट एवर इज रिटन, ठीक है. A ventilator is an opening near the ceiling of our house. Yes, it is very much correct written over here. Ventilation हमेशा 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 ventilations always घर के ऊपर ही होता है, कभी घर के नीचे की तरफ नहीं होता. वो जो घर की जो छत होती है ना बेटा, जिसको we are calling ceiling, उस सीलिंग के साथ लगा हुआ होता है ना. Like small kind of window, like small kind of window, it is called ventilation. Warm and polluted air rises up and goes out from the ventilation. जितनी भी गर्म हवा होती है, suppose this is our bed, ये हमारा पलंग है ना, and we are sleeping on this bed, है ना. And all the doors, whatever doors we have in our house, जितने भी doors हैं वो सारे डोर क्लोज हैं, वो सारे के सारे डोर जो हैं बेटा वो सब क्लोज हैं, ठीक है. एंड वी ऑल आर स्लीपिंग विद आवर फैमिली इन आवर हाउस, है ना. सपोज दिस इज योर बेडरूम एंड यू आर स्लीपिंग ओवर देयर विद योर पेरेंट्स, राइट. आपके रूम का दरवाज़ा तो बंद है, देन हाउ यू विल गेट फ्रेश एयर? सो यू विल गेट फ्रेश एयर फ्रॉम दिस वेंटिलेशन, यू विल गेट फ्रेश एयर फ्रॉम दिस वेंटिलेशन, है ना. यू विल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वेंटिलेशन. और सोते समय जितनी भी हमारे रूम की जो हवा है ना बेटा, वो गर्म होती है, वो ऊपर उड़ती है, हवा तो हमेशा ऊपर उड़ती है, और वो जाकर इस वेंटिलेशन से बाहर हो जाती है, ठीक है. सो वेंटिलेशन हैज़ टू वर्क. फर्स्ट, वेंटिलेशन गिव्स अस द प्रॉपर ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, है ना, while closing all the doors of our houses, and whatever warm air, whatever polluted air of our room, it goes out from that ventilation,
Understand? Understand? Hope you understand. Hope you understand. Okay, so this is all about the a good house. This is all about the a good house. Last 2 lines are remain. I am going to read, then I will explain, then I will close this topic today. Right? We should keep our house neat and clean. Yes, it is very much correct written over here. We have to keep our house neat and clean, especially the kitchen and the washroom. है ना? Because kitchen is the place where mama is preparing food for the family. So it should be neat, clean and very very tidy. It should be germ free. है ना? And toilet also. Toilet is area when we all the family members are using. So toilet or washroom should be neat and clean, always germs free. है ना? So always throw all the garbage in dustbin only. Always throw all the garbage in dustbin only. This much is written in your book. See, dear children, we should need to clean everything, not only our house. है ना? I am not talking about only your house. मैं सिर्फ आपके घर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. आपको अपना घर, अपनी कॉलोनी, अपना स्कूल, एवरीथिंग आपको साफ रखना है. एवरीथिंग. Always throw all the garbage in the dustbin only. है ना? So this is enough from my side. My time is going to over. So we will meet in next lecture. Then we will discuss about pupil, those who build the house for us. Pupil, those who build the house for us. है ना? So till then, bye bye. Have a nice day. Take care of yourself. God bless you. Bye.